Okay, today we are going to start with a new topic called data migration. Okay, or you can say that data exchange, right? तो ये data migration, data exchange आज हम लोग देखेंगे. As we know that uh, basically data is available in your Salesforce org, and if you want to fetch that data from your Salesforce org, then you can do that data relevant operation, as well as if you want to externally feed some data into the Salesforce org, then that kind of operation is also going to be performed by using this data migration tools. Okay, so basically data migration, there are two data migration tools are available with us. One is internal data migration tool, second is external data migration tool. But before that, we need to understand what are the different techniques are there for the data migration, right? First technique है हमारा traditional techniques, where you feed the data record by record. जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में रिकॉर्ड्स हम लोगों ने फीड किए थे. फॉर एग्जांपल लीड, अपॉर्चुनिटी, कॉन्टैक्ट, कैंपेन, इसमें क्या किया हम लोगों ने रिकॉर्ड फीड किया. सो वी क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड बाय जस्ट क्लिकिंग अ न्यू बटन, right? So if you go there and if you want to add a new account, what you are going to do, you just need to click on this account and you just need to click on new button to create a new record, right? This is the one traditional method. You can insert a number of records one by one individually. The second thing is by using this internal like external tools, right? So by using that, you are supposed to insert the bulk data. आप सपोज करो कि आपके पास में थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो आप इंडिविजुअली मैन्युअली अगर उसको आप फीड करते बैठोगे तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, राइट? तो हमको वो नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, बल्क में डेटा इंसर्ट करेंगे इनटू दिस सेल्सफोर्स ऑर्ग, राइट? एंड टू डू दैट वी हैव इंटरनल एंड एक्सटर्नल टूल विद अस, जिसका यूज करके हम बल्क डेटा आपके सेल्सफोर्स ऑर्ग के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं. थर्ड आता है मेरा इंटीग्रेशन. थर्ड इंटीग्रेशन इज बेसिकली रिलेवेंट विद द रन टाइम डेटा. अब कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रहा है और वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म होते वक्त अगर उसमें से कुछ डेटा आपको एब्जॉर्ब करके आपके सेल्सफोर्स ऑर्ग में सेव करने का है, देन दैट सिचुएशन यू यूज इंटीग्रेशन टूल, राइट? बट अगर आपको कोई डेटा सेल्सफोर्स से बाहर निकालना है या फिर सेल्सफोर्स के अंदर इंसर्ट करने का है फ्रॉम योर लोकल सिस्टम और फ्रॉम एनी परमानेंट डेटाबेस, राइट? तो वहाँ पे हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल टूल का यूज करेंगे. सो दैट इज बेसिकली रिलेवेंट विद द स्टैटिक्स थिंग, राइट? तो डायनामिक रिलेवेंट डेटा जब हम लोग हमारे डेटाबेस के अंदर, हमारे सेल्सफोर्स के अंदर कैप्चर करते हैं या फिर सेल्सफोर्स से बाहर निकालते हैं, देन दैट टाइम वी यूज इंटीग्रेशन. So basically, we are not going to deal with any kind of integration right now, but we definitely deal with internal and external tools that are available, right? So what is data management or a data migration? Data migration is the process from where you are supposed to insert a data, external data into the Salesforce or vice versa. Means you are supposed to export the data from your Salesforce or to the outside, right? So ये प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं. एंड टू डू दैट, एज वी सेड, वी हैव two tools with us. One is internal tool and another is external tool. In internal tool we have data import wizard. Okay, so we have data import wizard with us, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, डेटा इंपोर्ट कर सकते हो इनटू द सेल्सफोर्स ऑर्ग. वेयर एज जो एक्सटर्नल टूल होता है, एक्सटर्नल टूल हम उसको एक्सटर्नल ही क्यों कहते हैं, बिकॉज द रीजन इज दैट कि वो पर्टिकुलर टूल हमको हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल करना होता है, ना कि सेल्सफोर्स ऑर्ग के अंदर. सो वो बिकॉज वो लोकल सिस्टम पे स्टोर्ड होता है, उसका यूज करके हम सेल्सफोर्स ऑर्ग के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं वहां से डेटा. दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर टूल इज कॉल्ड एक्सटर्नल टूल, जिसका नाम है डेटा लोडर. तो डेटा लोडर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरनल टूल, एंड दैट इंटरनल टूल इज कॉल्ड डेटा इंपोर्ट विजार्ड.
Now, in data import wizard, we are actually going to perform a multiple operations. कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? So the first one is insert operation. We are supposed to insert a multiple or bulk amount of data into my Salesforce or right. Second operation आता है update operation. In update operation, we are supposed to perform an update operation relevant with the multiple data in the Salesforce order. तो एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर अगर आपको चेंजेस करने हैं देन वी यूज अपडेट ऑपरेशन बेसिकली एंड इफ यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू न्यू डेटा और न्यू रिकॉर्ड्स तो हम लोग इंसर्ट ऑपरेशन करते हैं देन द थर्ड वन इज अपसर्ट ऑपरेशन अपसर्ट मीनिंग होता है अपडेट प्लस इंसर्ट राइट सो वेन एवर यू वॉन्ट टू एड अ न्यू रिकॉर्ड प्लस अपडेट और चेंज द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स है ना तो दोनों चीजें एक साथ हो रही है रिकॉर्ड चेंज भी कर रहे हो और साथ ही साथ आप न्यू रिकॉर्ड्स को ऐड भी कर रहे हो सो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड अपसर्ट सो इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ योर यू कैन सी ओवर हियर अपडेट प्लस इंसर्ट सो यहाँ से अपसर्ट आया है सो सर्ट इज फ्रॉम इंसर्ट एंड यूपी फ्रॉम द update so that two things comes together and form a upsert. Now the question is why the name itself suggests as an upsert. तो आप insert plus update right यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आप देख सकते हो insert और update इनको combine करके indate ऐसा भी हम लोग ऑपरेशन बना सकते थे why we create upsert why we not create indate right because अपसर्ट के अंदर बेसिकली पहले अपडेट ऑपरेशंस परफॉर्म होता है मतलब जितने भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसके चेंजेस हम सबसे पहले अपलोड करते हैं एंड देन वी परफॉर्म द इंसर्ट ऑपरेशन सो फिर बचे हुए जितने रिकॉर्ड्स है जो मैचअप नहीं हो रहे हैं विद एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड उनको हम इंसर्ट करते हैं दैट्स व्हाई अपडेट विल परफॉर्म फर्स्ट एंड देन इंसर्ट दैट्स व्हाई द नेम इटसेल्फ कॉल्ड अपसर्ट एंड इनडेट क्यों नहीं होता है क्योंकि इंसर्ट ऑपरेशन पहले नहीं होता है दैट्स व्हाई इनडेट ऐसा कोई वर्डिंग्स हम लोग यूज नहीं करते सो देयर इज नो सच ऑपरेशन कॉल्ड इनडेट देयर इज ओनली वन ऑपरेशन कॉल्ड अपसर्ट right why it is absurd because we update first and then we insert so I hope you'll get the basic understanding of this data management tool. In this, we are going to talk about the data migration and under which we are going to discuss about the internal tool first of all और कल हम लोग external tool के बारे में जानेंगे. Now, internal tool is your data import wizard to perform the operation. Now, to go to the data import wizard, first of all, you need to log into your developer org. Then you just need to go to the setup. Once you enter into this setup, मतलब platform as a service पास में अगर आप आ गए हो तो फिर यहाँ पे quick find करके option होगा. So just click on this quick find and then search for the data, right? And then data import wizard. Now you can see we have data import wizard available with us. Let's click on that to open this data import wizard. Once you click on data import wizard, a new window will pop up over here. Once will pop up, you can see uh, there are various options are present over here. First one is data import wizard. You can see recent import job. So these are the column names of your table. So basically जो अब recently अब आप import wizard से operation perform करोगे वो सारे operation इस table के अंदर show होंगे, right? Then you can see before you import your data, what you need to do, right? So first of all, you need to clean up all the data import files. Then make sure that your file name match a Salesforce field name. वो हम लोग आगे देखने वाले हैं किस तरह से मैच करना है. And don't import too many record at once. है ना बहुत ज़्यादा record आप एक साथ import मत करो because basically this import wizard having a restriction. आप 50,000 रिकॉर्ड से ज्यादा इंपोर्ट
नहीं कर सकते हो या फिर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो डेटा को बाय यूजिंग दिस डेटा इंपोर्ट विजार्ड। दिस इज द इंटरनल टूल जिसका जिसका यूज करके आप नॉट मोर देन 50,000 रिकॉर्ड, तो एक साथ आप 50,000 रिकॉर्ड ही आप बेसिकली क्या कर सकते हो, पेज कर सकते हो। सो दिस इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ योर डेटा इंपोर्ट विजार्ड, एंड दैट्स द रीजन दैट वी यूज द एक्सटर्नल टूल, एंड दैट इज डेटा लोडर। और वो डेटा लोडर 50 मिलियन रिकॉर्ड्स को सपोर्ट करता है। So you get the difference, but we should know according to the syllabus, ये interviews में पूछे जाने वाले questions है. That's why we need to learn about the data import wizard. Now, in data import wizard, there are three easy steps to import the data. First, prepare your data import. Prepare your data for import. Then choose the data to import. Then edit the field mapping. Then review and start import, right? So these are the steps which we need to follow. So basically these are the information which is already being there. आप read करके भी समझ सकते हो कि exactly data import wizard काम कैसे करता है. Now we try to actually import the data from external source to this Salesforce organization, okay, or this Salesforce org. And to do that, we have an option called launch wizard over here. We need to click on this launch wizard button to launch our wizard. Now, once you click on that, your wizard is now launched. Now you can see there are only three easy steps. First, you need to choose the data. Second, you need to map the data. And third is you need to import the data. Now, on my left hand side, you can see what kind of data you are importing. So यहाँ पे हमारे पास में दो ऑप्शन है. One is the standard object where you can get the list of standard object, right? पर यहाँ पे भी restrictions होते हैं डेटा विजार्ड, डेटा इंपोर्ट विजार्ड में, that it shows some limited standard object. And second option we have, that is custom object. Now you can see I have various custom objects. तो customs object सारे के सारे दिखाएगा, लेकिन standard object में विजार्ड क्या करेगा, कुछ limitation देगा, उतने ही रिकॉर्ड्स आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चूज कर सकते हो. सो अब यहाँ से क्या करना है, बेसिकली वी नीड टू चूज द ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमको डेटा भेजने का है, राइट? बट बिफोर वी इंपोर्ट द डेटा, वी मस्ट first of all create data which we want to import. And to do that, what I need to do, I need to create one CSV file. CSV stand for comma separated value. Okay, so how will you create a CSV file? You just go for the Excel, because Excel is an advanced tool जिसका यूज करके हम CSV फाइल बना सकते हैं. That's why I am directly dealing with the Excel tool. So just go to Excel. I am also explaining you how to create a CSV file if you don't have this Excel tool with you, right? So you just open this blank Excel sheet, and once you open this blank Excel sheet, let's try to feed some data over here जो हमको import करने का है. So basically what I'm going to do right now, I'm going to import the data for my student object. Okay, so if you go there and check for the student object, let's say TMS. TMS is the application which we created. तो अभी हम लोग बेसिकली वापस हमारे एप्लीकेशन पे आ चुके हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे. Now we have this student object with us. If you go to your student object, you can click on new to create a new object, and you will get what are the fields required to enter the data. So mandatory thing is student name, email ID, degree, mobile number, right? Username, password, country, state, and section. So what I'm going to do, I'm going to copy all those data or the field names, right? So I'm going to copy this and put it in my Excel sheet as an header. Okay, तो ये क्या बन गया, अभी इसका हेडर बन गया. तो स्टूडेंट नेम, तो इसके नीचे स्टूडेंट्स नेम ऐड करेंगे हम लोग. देन आई एम गोइंग टू कॉपी द सेकंड फील्ड, दैट इज स्टूडेंट ईमेल आईडी. So this is gonna be my second column, considered to be a second field, right? Then I'm going to pick the degree. So just copy this and paste it over here. Let's paste this.
Then, so basically what I'm going to do, I am actually creating a CSV file. Without CSV file, we are not supposed to enter the data into my Salesforce org. That's why I'm going to create this CSV file. And to create a CSV file, I need to know which kind of data I need to insert into my Salesforce org. And to do that, I'm just copying all the fields over here. Shit. I'm just copying all the fields over here. Just copy this. Instead over here, let's have two more fields with us. One is called country. Sorry, three more fields in there. Country. Then we have state. And then we have section. Right. So section ABC. Basically, what I'm going to do, I'm copying this data into my Excel file to create a CSV. Now I'm going to add a data over here. So कुछ random data हम लोग यहाँ पे create करेंगे to insert all those data. तो मैं यहाँ पे कुछ random values यहाँ पे insert करूँगा and I'm going to denote in a such a way that कि हमको rectify हो जाए कि that data is a imported data. Okay, so I'm going to add the name, let's say Kunal underscore IW is for import wizard, right? So whenever I get this suffix called IW, I will understand कि चलो ये जो भी है ये imported data है. Let's say Kunal, let's say Pratik underscore IW, let's say Sandesh underscore IW. Let's have one more value. Priya underscore IW. Let's say Mukesh underscore IW. Right. And now I'm going to feed some email ID, a random email ID that is kunal@gmail.com. Some random values I'm going to feed in over here. Pratik @ अब ये जरूरी नहीं है कि रैंडम वैल्यू फीड करना चाहिए. बेसिकली आपके पास में जो डेटा आपको इंपोर्ट करना है उसका वो डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हो. बिकॉज आई डोंट हैव सच स्ट्रॉन्ग डेटा विथ मी, तो मैं अभी रैंडम डेटा जनरेट कर रहा हूँ. तो sandesh@gmail.com. then we have priya@gmail.com. and then the next is mukesh@gmail.com. Right, then we need to specify the degree. Okay, because degree is a pick list, we need to check for the values. We have d.e, that is be. So I'm going to copy this b for all the students. Then mobile numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So you just enter any random 10-digit number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Let's have user ID, that is Kunal 1 and Pratik 1. Condition Priya location, right? Password is Kunal@123. Then Pratik ये वैल्यूज में यहाँ से रैंडम वैल्यूज यहाँ पे ऐड कर दिया है. देन कंट्री इज इंडिया. I'm going to copy all this data. Then state is Maharashtra. And I'm just feeding some random sections to there. Sorry, section B, section C, section B, section C, section D. Right. So I'm going to save this Excel file. Now, whenever you save this file, please
go to your browser now. अब जब भी आप इसको सेव करोगे देन उसका सेव टाइप आपको चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक टू CSV, राइट? सो हियर वी हैव CSV कॉमा डिलिमिटेड, इसको हमको चूज करना पड़ेगा एंड देन यू जस्ट सिंपली पास द नेम, लेट्स से टेम, राइट? टेम.csv. So I am going to save this on my desktop. Let's save this file. Now you can see the temp file has been created successfully. You can see this temp file is present over here, right? Now I'm going to import this temp file by using my import wizard. Now how many records are there? Now I have 7 records with me. In Excel sheet, I have filled 1, 2, 3, 4 and 5 records. It means 7 plus 5. नेक्स्ट टाइम हमारे पास में 12 रिकॉर्ड्स आना चाहिए। और स्टूडेंट नेम में हमें सफिक्स में IW दिखेगा विच डिनोट्स दैट डेटा इज imported, right? So now to import the data, what I'm going to do, I'm going to my import wizard और इधर आने के बाद में कस्टम ऑब्जेक्ट चूज करना है। अब कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग इंपोर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? सो बेसिकली आई एम गोइंग टू चूज द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। सो हियर आई नीड टू चूज द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, राइट? सो चूज करने के बाद में you get an option which operation you want to perform, whether you want to add a new record or you want to update the existing record or you want to perform the upsert operation, means adding a new record and updating the existing record. So right now I am going to perform the insert operation. So to do the insert operation, we have first option called add new records. Just click on this. Once you click on this, it will show you match by. Filal, for a time being, we are not going to consider this. We will gonna explain you what is matched by. Basically, you need to match those values by the name. अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है because we are performing the import operation. That's why we are not actually we are performing insert operation, that's we doesn't require this match field over here. As well as it will ask you which user field in your file designated record owner. तो ये फिलहाल हमारे पास में ये भी ऑप्शन की जरूरत नहीं है, सो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। Now on your right hand side you can see drag the CSV file here, है ना, to upload. So if you click on this CSV, it will pop up the options to upload the CSV. So you can either you go on a desktop, drag this CSV and put it over here, or you can simply choose a file from this option. Okay, use a file and one pop-up is there. ये विंडो पे हमने फाइल कहाँ पे स्टोर किया था? डेस्कटॉप पे स्टोर किया था. सो जस्ट गो टू द डेस्कटॉप and you can see your temp file. You just click on this temp file and click on open. Right, so your CSV is uploaded successfully. अब क्या करना है? You need to click on next. और नेक्स्ट करने के बाद में आप स्टेप नंबर 1 मतलब चूज डेटा, हमने डेटा चूज कर लिया है, हम लोग जाएंगे स्टेप नंबर 2, दैट इज एडिट द मैपिंग. वी नीड टू मैप ऑल दोस फील्ड. कौन से फील्ड्स मैप करने के हैं? ये फील्ड्स मैप करने. किसके साथ मैप करने के हैं? तो हमारे जो फील्ड्स इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर उसके साथ मैप करने. सो यू नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट फॉर एडिटिंग. अब देखो हम सेकंड स्टेप पे आ गए. सेकंड स्टेप पे आने के बाद में यू कैन सी बेसिकली क्योंकि हमने वहां से फील्ड नेम और वहां से कॉपी किया था तो ये ऑटोमेटिकली मैप हो गया क्योंकि स्टूडेंट ईमेल आईडी इज मैच विद द हेडर ऑफ योर CSV फाइल, राइट? सिमिलरली स्टेट इज मैप विद द डेटा फील्ड विच इज प्रेजेंट इन योर ऑब्जेक्ट. तो ये दोनों का मैचिंग हो गया, इसकी वजह से हमको कुछ करना नहीं है. बट इफ यू थिंक एनी वन ऑफ दिस मैपिंग इज गेट रॉन्ग, राइट, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो. अब कैसे हो गया? ये बहुत इजी हो गया. क्या सेम सेम नेम होने की वजह से इसने बराबर मैप कर लिया. गो बैक लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस स्टेप, राइट? And what I'm going to do, I'm going to change one of the field name from this header of CSV. Now I'm saving this file. Now what I'm going to do,
once again I am going to launch wizard. इधर जाने के बाद में I need to select the object. Which object? Custom object. So choose a custom object. Then I need to select the student. फिर second मुझे choose करना है add record option. Then I need to choose the CSV file. So to choose the CSV file, I am going to click on choose file button. Then I need to select the file. Then click on open. Now the first step is over. Click on next for the second step to map. Now you can see the CSV header is student and it is not mapped with the Salesforce object field. So what I'm going to do, I'm going to map this, and to map this particular field, I need to click on map link in front of this particular header. So you just click on map और मैप पे क्लिक करने के बाद में अब ये पर्टिकुलर फील्ड आपको ईमेल आईडी से मैप करना है, हमको पता है. सो आई एम गोइंग टू चूज ईमेल आईडी एज एन ऑप्शन, राइट. फिर ये चूज करने के बाद में आई नीड टू क्लिक ऑन मैप. नाउ देखो अभी आपका ये मैपिंग हो चुका है. वंस यू डन विथ योर मैपिंग, then you need to click on next, right. Once you click on next, now you can see the data has been imported successfully, and you can see that students record is there. On student object we added a new record from a tmp csv file. So यहाँ पे आप देख सकते हो 9 field is mapped and 0 field is unmapped. Now let's start the import. Let's click on import, start import. Now it says congratulations, your import has started. You just need to click on OK. Once you click on OK, it will show you the import operation information. So you can get the detailed information. At the bottom, you can see there is a uh, batches section. In this batches section, you can see this view request, view results, batch ID, start time, end time, and you can see record proceeded 5 and record failed 1. एक रिकॉर्ड फेल हो चुका है और 5 रिकॉर्ड हमारे 5 रिकॉर्ड में से एक रिकॉर्ड हमारा फेल हो चुका है, बाकी के रिकॉर्ड्स हमारे completed हो गए. So you just go there in your SaaS site and let's refresh this and see whether which record is inserted successfully and which record is not inserted successfully on all records, right. 7 onwards आप देख सकते हो 9, 10, 11 and 12. So these records are now being there. If you click over here, let me edit this view. This view. This filter. Basically, what I'm going to do, I'm going to add one more filter over here with a name. Okay. Basically, it is relevant with the filter. तो ये इसकी जरूरत नहीं होती. एक काम करते हैं, रिसेंटली व्यू में जाते हैं and check करते हैं. We have 9 Kunal IW. We can see the name of that particular student, that is Kunal IW. So Kunal IW is inserted successfully. Then we have Pratik, Sandesh, Priya and Mukesh. देखते हैं इसमें से कौन सा रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट नहीं हुआ है. And to do that, you just need to check the all records. So we have 9. Then click on 10. Take 10 is basically relevant with the Pratik. So Pratik is inserted successfully. Then go back. 11 number का record check करेंगे. It is Priya. So Priya is inserted successfully. And then go back and click on 12 number record. That is Mukesh. So Mukesh is inserted successfully. It means Sandesh record is not inserted correctly.
what we are going to do, we need to check कि कौन सा error आया था, and to check that error in this particular operation, we have this batches section under this. इसमें आपके पास में ये view result का option आता है. Just click on this view result. Okay, now the result file is downloaded successfully. Just open this result file. इस रिजल्ट फाइल को आप ओपन करोगे तो ये दिखाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे हमारा एरर ऑकर्ड हुआ था, राइट? सो यू कैन सी द संदेश रिकॉर्ड इज नॉट इंसर्टेड बिकॉज स्ट्रिंग इज टू लॉन्ग. पासवर्ड इधर इसकी लेंथ है 10 की, और हमारा जो पासवर्ड था वो पासवर्ड मोर देन 10 लेंथ का हो चुका था. दैट्स व्हाई data is not basically inserted over here. If you go to this password field, right? Sandesh 123 is a large password. 10 digits के ऊपर हमें password नहीं चाहिए. So I am going to reduce this password now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So we now insert this or we now converted this password into 9 digits. अब क्या करेंगे? For time being, I am going to delete all those data जो ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है. बस अभी वही डेटा रखेंगे जिसको हमको इंसर्ट करने का. एंड टू डू दैट, अब देखो अब क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे. एंड वंस अगेन आई एम गोइंग टू विजिट टू माय डेटा इंपोर्ट विजार्ड. So go to your data import wizard. Once again, I am repeating all those things to insert that Sandesh record into my Salesforce app. Now, just go to your app launch wizard, then select a custom object. Which custom object you need to select? That is student. Then we need to click on add a record. Then we need to choose a file. And now I'm going to choose a file. वही टेम फाइल चूज करेंगे क्योंकि उसके अंदर अभी सिर्फ एक रिकॉर्ड है. इसको चूज किया, क्लिक ऑन नेक्स्ट. Then you can see one field is not mapped. Let's map this field with the email ID, right? Then click on next. It will show me some details relevant with the import operation, and then just click on import and click on OK. Now once you click on OK, ये ऑपरेशन उससे रिलेवेंट डिटेल्स इंफॉर्मेशन आएगा. बैचेस सेक्शंस में आप देख सकते हो the record has been proceeded successfully बोल रहा है, and it shows that 2 record gets failed. So basically 2 records fail नहीं होने चाहिए थे. Still I am going to check it into my Salesforce org. Now you can see a new record has been inserted successfully with the ID of stud014. So if I click on this, you can see this Sandesh IW, right? It means we are successfully import or insert data into my Salesforce org by using this CSV. अब मैंने जैसे आपको बोला था कि if you don't have any tool like Excel, तो आप क्या कर सकते हो? You can create your Excel file by using your notepad. Okay, so you just go to your notepad, right? यहाँ पे क्या करना है हम लोगों ने? यहाँ पे जो जो चीजें हमको इंसर्ट करनी है, जो भी डेटा हमको इंसर्ट करना है, दैट डेटा यू नीड टू बी राइट इट डाउन ओवर देयर. तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, ये पूरा डेटा कॉपी कर लेता हूँ एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट इट इनटू माय Excel. So what I am going to do, I am just separating this data by a comma. Okay, so ये comma करके मैं क्या करूँगा, इसको separate out करके चलेंगे. So this is password comma, right? And then enter करने के बाद में न्यू रिकॉर्ड आएगा. सो इधर कॉमा करेंगे इसको. This is the basic way by using which you are supposed to create an Excel sheet. Okay, so sorry, CSV file. Once you
enter all those data, you just go and click on save. Once you go and click on save, first of all, you need to convert your save type from txt to all files, right? And then what you need to do, you need to just give the name of that particular file, that is stain, and the extension, that is CSV, and you need to store it on your desktop. So temp CSV already हमारे पास में है, so we said temp1.csv. Now you need to click on save. Now your CSV file has been created successfully. इसको क्लोज करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, और इधर आप देख सकते हो दिस इज माय टेम्प वन. इसको आप डबल क्लिक करोगे तो नाउ इट इज ओपनिंग इनटू माय एक्सेल शीट. अब देखो, ये देखो, है ना, that comma separated value is now considered to be a separated column. So in that way you are supposed to create the Excel sheet or CSV file by using the notepad, right? So as we know, we talk about the insert operation now. Let's talk about the update operation. To perform the update operation, what I'm going to do, once again, I'm going to visit to import wizard. Once I go to the import wizard, I need to click on launch wizard, right? फिर आप क्या करोगे, ऐसे ही एक्सेल शीट से डेटा उसको दे दोगे और वो अपडेट करेगा. बट यू ऑलवेज रिमेंबर, whenever you want to update a record which is already being there in a Salesforce, तो वो मैप होना चाहिए. मतलब हमारा डेटा और उसके अंदर का डेटा पहले मैच होना चाहिए. इफ दे मैच इज हैपन, देन जो फील्ड आप अपडेट करना चाहते हो वो फील्ड अपडेट होगी. And that match is going to be happen with the help of your unique ID. Okay, where you find the unique ID? If you go to your student tab, इधर मैं बता रहा हूँ आपको, देखो अभी TMS में गए, स्टूडेंट टैब में गए, स्टूडेंट टैब पे फिर हमने किसी भी एक स्टूडेंट को ओपन किया. Once you open the student, this particular record is now bind with the unique ID, और वो unique ID आप ये URL में आप देख सकते हो. You can see this unique ID, right? So this is 15-digit unique ID, but basically this particular record is connected with the 18-digit unique ID. But due to security reasons, last 3 digits यहाँ से hide किए जाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 15 digits show होंगे, right? So because it shows only 15 digits, it is not the correct way to copy all those unique ID relevant with the record and pasted in your Excel sheet. वो बराबर नहीं होगा, वो मैच ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि 18 digit is not going to match with the 15 digit. So second way क्या है फिर? Second way to get this particular ID is to export the data first. So whenever you want to perform any update operation, to perform the update operation, we require the record ID or unique ID. And that unique ID कैसे मिलेगा? तो that unique ID is actually going to fetch first of all by using the export operation. So पहले क्या करेंगे? पहले export operation perform करेंगे, and then we perform the update operation. And to perform the to perform the export operation, what you need to do, you need to search for the, go to the setup first of all, go to your quick find and search for the export, right? So you just search for the export, you can see data export there. You just click and open this wizard. Once you open this, now you have two options with you. One is export now, another is schedule export. So what I am going to do, I am going to click on export now to export the data. Once I click on export now, now it is going to ask me about from which object you want to export your data. So basically it shows include all data. अब सभी objects का data हमें नहीं चाहिए. So basically we require data only from our custom object, and that is called student, जो मुझे सबसे last में मिलेगा. So you can see here we have our student object with us. So I need to just click on this student, right? इस पे क्लिक करने के बाद में क्या होगा, सिर्फ स्टूडेंट का डेटा मैं क्या करूंगा, पेज करूंगा. सो आई नीड टू चूज द ऑब्जेक्ट, रिलेवेंट ऑब्जेक्ट जिसका डेटा आपको एक्सपोर्ट करने का है, एंड देन फाइनली यू नीड टू क्लिक ऑन स्टार्ट एक्सपोर्ट, राइट?
once you do that, it took some time to export your data. और ये क्या करेगा आपको, it will send you an email, right, relevant with that export data. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है, your export has been queued, you will be received an email notification when it is completed. जब भी ये complete हो जाएगा तो आपको मेल आएगा. It took some time. क्यों ये टाइम ले रहा है? क्योंकि Salesforce org is a multi tenant, यानी कि एक सिस्टम मल्टीपल यूजर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. सो मल्टीपल यूजर्स का डेटा एक ही सिस्टम पे आने की वजह से वहां पे ह्यूज डेटा होता है, और उस ह्यूज डेटा में से फिर आपका डेटा एक्सपोर्ट करने के लिए सिस्टम रिक्वायर्ड सम टाइम. दैट्स व्हाई यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा टू एक्सपोर्ट योर डेटा, to see whether the data is exported correctly or not, or have been done or not. What you are supposed to do, either you go to your email ID and check your email ID. So what I'm going to do, go to my email ID and check. I'm going to my email ID and check whether this operation is performed successfully or not, or completed or not. So go to your mail ID. Now you can see nothing has been received till that time. Okay, so actually, let's see, is there anything in my spam? Let's, otherwise इधर नहीं मिला तो इधर आप इसको रिफ्रेश करो. If it is completed, then इधर ही नीचे आपको एक नया सेक्शन में वो डेटा शो हो जाएगा. Let's see. Data export is currently in progress. Your organization. Let's wait for a while. Let them export your data. It is still in progress. Also, wait for a while. No? Let them export your data. Basically, it is in a progress. Okay, but if you don't get your exported data, then you are not supposed to perform any update operation, right? So first of all, we need to export our data. इसको mail आने दो. Without having that ID or unique ID relevant with the records, we are not supposed to perform any update operation. This is very important. ये हमेशा याद रखना, है ना? Whether you are doing your programming or you are working in a system administration, in both the places, this ID is important in terms of DML operation, that is dynamic manipulation language. Okay, so whenever you perform update inside delete, you require ID relevant with that. Okay, अभी एक काम करते हैं. We are going to stop over here. On tomorrow we are going to cover a rest of the portion, which is I think time लगेगा. And इसको आज एक्सपोर्ट होने देते हैं. कल हम देखेंगे इसके नीचे एक नया सेक्शन आता है where that file is now available with us.
उसको डाउनलोड करेंगे एंड वी ट्राई टू मेक चेंजेस इन दैट फाइल एंड फिर उसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे, राइट? सो अपडेट, then we try to perform the delete operation, sorry, delete operation, right? And then we try to perform the upsert operation. delete operation हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे. if you want to perform a delete operation तो हम लोग external tool के साथ में delete operation करके दिखाएंगे, because अभी हमको ये org के अंदर जो डेटा है वो डेटा को परसिस्ट करने का है, उसको एज इट इज रखने का है, क्योंकि हमको उसकी जरूरत है, राइट? दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म डिलीट ऑपरेशन फॉर टाइम भी. बाद में इसको हम लोग डेटा लोडर के साथ में डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे. सो लेट मी ट्राई वंस अगेन. अगर ये हो गया तो अपडेट ऑपरेशन कर ही लेंगे अभी, अदरवाइज कल देखेंगे इसको. इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस. आई थिंक it require more time, right? So what I'm going